fungi also causes diseases in plants and animals. तो ए प्रकार ऑर्गेनिज्म को आमे कौन कहबा दोज हु कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इट मीन्स दे आर pathogenic to organisms. Pathogenic, they are completely pathogenic to some organisms. For example, your Poxinia, one type of disease which occur in the wheat plant. Wheat ର scientific name तुमको कौन कहैतिला पिला माने Gastrical, that is Triticum aestivum. Okay, देखो तमरो व्हीट प्लांट रे तमे देखिबो जो ब्राउन रस्ट टाइप रो स्ट्रक्चर देखा जाउची से गोडा को तमरो स्टेन ही जाइनी हैला से गोडा को कोन वन टाइप ऑफ तमरो डिजीज हेची प्लांट रे जोटा के हमें कोन कहूचो ना व्हीट रस्ट डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय द फंजाई Poxinia. They are cosmopolitan in nature. That's why they are called cosmopolitan in nature. तो कहीं ना तुम देखो different habitat रे देखुचो. You can see them in variety of habitats. For example, in your foods, in your fruits, vegetables, in as like in plants, as parasites in plants and animals. So different habitat as you can see that there are some also edible mushrooms, there are some poisonous mushrooms also. They can grow on rotten tree trunks also. So for this reason, for this variety of habitats they are found, for this reason that as they are found in variety of habitats, so we can use only single term for them that they are cosmopolitan in nature. Okay, as they can occur in everywhere, for example air, water, land, everywhere, and generally they grow in warm as well as humid conditions. Generally they grow in warm as well as in humid conditions. तांकर ए तमरो टेम्परेचर टा ए कंडीशन टा रहे दरकार जेमती फॉर एग्जांपल इन algae से माने स्वाम्पी एरियाज रे ग्रो करछंदी मॉइस्ट हैबिटेट रे ग्रो करछंदी तो सेमिति फंजाई तमरो वार्म आउ ह्यूमिड कंडीशन रे से माने इजीली कोन करि परंती ना ग्रो करि परंती सेति पई तमर जो फूड आछी तमे ताको रेफ्रिजरेटर रे रखि देले रेफ्रिजरेटर रे कोन रहउची एनवायरनमेंट कूल रहउची तो सेति से माने इजीली ग्रो करि परंती से माने स्पोर्स दे कुड नॉट जर्मिनेट इन द रेफ्रिजरेटर. So when we keep food in the refrigerator to prevent food from contamination by fungi. Okay, now we will look into their cell structure. Cell structure. से माने का cell structure को देखिबा से माने केमती grow करंती देखिबा. Okay, so your NCERT mentions this that fungi are filamentous. They are long, slender, thread-like structures which is called hypha. This is your NCERT line that they are filamentous. Fungi are filamentous. They have long, slender and what? Thread-like structures which is called hypha. माने तांका सेल स्ट्रक्चर को देखिबा जदी से फंजाई को हम जदी देखिबा ए देखो पहला मन देखो से माने हमको लॉन्ग स्लेंडर मीन्स थिन पतला हमको तुमको कोन ना एमती थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तुमको देखिया को मिलिबो जोटा को हमें कोन कहूछु हाइफा कहूछु हाइफा तो एमती तुमको लॉन्ग थ्रेड स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स हमको देखिबा को मिलिबो जोटा को हमें कोन कहूछु ना सिंगल इंडिविजुअल तमरो स्ट्रक्चर को तमरो कोन कहूची इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई दैट इज व्हिच इज long, slender as well as thread like, that is called hypha. Okay, तो एमती बहुत सारा hypha. When a lot of hypha form an aggregation that is called mycelium. जतबेले तमरो बहुत सारा hypha कोन करछंदी गोटे नेटवर्क फॉर्मेशन करछंदी गोटे एग्रीगेशन फॉर्मेशन करछंदी. When a lot of hypha, when many hyphas or when a lot of hypha they form an aggregation or they form a network like structure. Network माने गोटे जाल भलिया structure, network like structure तयारी करछंती. They are at that time as called as mycelium. So what do you learn here? That fungi तमे जदि हम ताकर सेल स्ट्रक्चर को देखिया ताकर इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को देखिबा we will see that long, slender as well as thread like structure which is called hypha. And when the hypha, group of hyphas form aggregation or form network like structure, that is called mycelium. And sometimes when the conditions are completely unfavorable, these mycelium form tip
form long, slender and completely these mycelium completely grow upward. The जो mycelium देखुचो they grow upward and in their tip of the structures they completely develop some unicellular spore like structures, and this structure is completely called as phylum. This structure is called as fruiting bodies. When the situation is unfavorable, these mycelium किछटा mycelium कौन करंती, they grow upward. Okay, से longitudinally grow करंती आ grow करिके से मानकर टिप रे से माने कौन करंती ना spore like structure formation करंती आ से spore मानकर true wall थाए तो सेति पय से माने adverse condition रे रही पारंती आ जत्ते बेले सिचुएशन कौन हे जाय ना फेवरेबल हे जाय से माने अगेन कौन करंती जर्मिनेट करंती. तो किछटा टर्म तमे एठी जानला कोन हाइफा mycelium fruiting bodies. Okay, hypha mycelium fruiting bodies. Their bodies consist of long, slender, thread-like structures. This is your NCERT line, dear students. This is your NCERT line. NCERT रे तमरा एटा completely mention अछि, ए line ही mention अछि कोन ना their bodies consist of long, slender as well as thread-like structures which is called hypha. हाइफा आउ से हाइफा कौन करंती ना किछ एग्रीगेशन फॉर्म करंती, नेटवर्क फॉर्म करंती. से नेटवर्क ही तमरा कौन कुहा होची तमरा माइसिलियम. ओके, माइसिलियम. तो तमे जो हाइफाटा देखुचो, दिस हाइफा कैन बी आल्सो टू टाइप्स. दिस हाइफा कैन बी आल्सो टू टाइप. लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइफा वी कैन सी. ओके, हाइफा, these हाइफा कैन बी आल्सो टू टाइप्स. One is aseptate, another is septate. One is aseptate, another is septate. These hypha can be two types. One is aseptate, another is septate. What is aseptate and septate? Okay, in aseptate you will see some tube-like structure. Okay, tube-like, thread-like structure which is called aseptate. Aseptate means, okay, first look into the septate category, you will easily understand the aseptate category. Okay, in septate, okay, for example this is the hypha of the fungi. For example this is the hypha of the fungi. Here nucleus is present, okay, and you will see there some walls are there, wall or septas are there in between the hypha. माने से हाइफा रो मझरे मझरे तमे किछटा वॉल्स देखिया को पाइबो, किछटा तमरा सेप्टा देखिबा को पाइबो. सेप्टा प्लूरल वर्ड, सेप्टम इज सिंगुलर वर्ड. ओके, तो किछटा तमे सेप्टा और वॉल देखिया को पाइबो. तो से सेप्टा थिबारु तमरा ए टाइप रो तमरा हाइफा को कहाउची तमरा कोन ना सेप्टेट. दिस टाइप ऑफ हाइफा इज कॉल्ड सेप्टेट because there is walls or there is septa in between the hypha. Okay, our nucleus generally भी थांती, nucleus जेमती रहिया कथा nucleus भी सेमती थांती. So these are the nucleus. एटा भी तमरा nucleus. So that is why this type of hypha is called septate hypha. Okay, then what is aseptate? A means, for example, you are asexual, asexual. Sexual means with the involvement of sex organs, and asexual means without the involvement of sex organs or the gametes. So like that, in septate you see some walls or septa are present within the hypha, and like that in aseptate hypha also you won't see their walls, you won't see their septas. Okay, तो तमे एठी कोन करिवनी ना तमे एठी walls देखिबा को पाइबनी. न्यूक्लियस अछंती बहुत सारा न्यूक्लियस अछंती. तो बहुत सारा न्यूक्लियस थिबारु they are called multinucleated. If there is a single nucleus, it is called uninucleated. If there are many nucleus, it is called multinucleated. जेतेबेले single nucleus रहउछ हम ताको कहउछ uninucleated. When there are more than one nucleus हे गेले सेटा कहउछ multinucleated. सो आमे दीटा टाइप रो कंडीशन को देखिले, दीटा टाइप रो हाइफा को देखुछु. गोटे रे तमरो वॉल देखिया को मिलुची, जोटा वॉल और सेप्टा देखिया को मिलुची.
ओके जोटा को आम कौन कहूँ ना सेप्टेड हाइपा सेप्टेड दिस टाइप ऑफ हाइफा इज कॉल्ड सेप्टेड हाइफा where we can see walls within the hypha. Okay, so this type of hypha is called long tube like structure. Is this type of hypha is called septate hypha, and one you can see that there is no walls within the hypha, but we can see there are more than one nucleus present there. So that type of hypha is called multinucleated hypha, aseptate hypha, multinucleated aseptate hypha. This is septate hypha, and this aseptate as well as multinucleated hypha, it has also another term, that is sinusitic. That is sinusitic. 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 ये जो multinucleated as well as तमे कौन aseptate condition टाको देखुच एटा को आमे कहि परिबा aseptate टाइप रो हाइफा को देखुच एटा को आमे कहि परिबा कौन sinusitic. एटा रहला तमरा septate आ तमरा multinucleated as well as completely aseptate condition हे गले सेटा तमरा हे गला sinusitic hypha. So and it can be also branched. Septate जो तुम देखो जो wall formation है जी एटा sometimes it is also branched branch structure also. branch भी तारा कौन हेतिबो ना develop हेतिबो एमती branch भी develop हेतिबो. ए देख दियो पहला माने डायग्राम रे देख दियो हाइफा जोटा देखो जो सेटा कौन हे परिबो ना दुईटा टाइप रो हे परिबो. Hypha can also be two types. One is septate, another is aseptate. One is septate, another is aseptate. Aseptate. In septate hypha, in septate, you will see some septa or walls are present within the hypha. Some septas or walls are present within the hypha. That's why it is called septate hypha. It is also branched. It is also branched. And here in aseptate you will see some tube like structures, and there are also many nucleus present within it. More than one nucleus is called nuclei. Okay, तो बहुत सारा nucleus present अछंती तो सेथि पई ए जो multinucleated as well as तमरो aseptate condition जोटी आ माने कोन without a means without. For example a section ले पढ़थिलो without the involvement of sex organs, तो aseptate माने without. तो ए दुटा कंडीशन को तमरो को हाउची कोन sinusitic condition. तो तमे कोन कोन सब टर्म्स पढ़िलो which terms तमे कोन एबे सब जानिलो ए टर्म्स सब कोन सहित टर्म्स सहित तमे माने कोन हे गेलो ना परिचित हल्ला कोन सब टर्म्स पढ़िलो. फर्स्ट तमे पढ़िलो हाइफा, सेकंड तमे पढ़िलो माइसिलियम, हाइफा. Hypha कौन what is hypha? Hypha are long, slender as well as thread like structures. What is called hypha? And these hypha can also be again two types, that is one is septate, another is aseptate or sinusitic condition. Okay, तो पिला माने तम माने भाबुथिबो कि मैम ये जो हाइफा में देखुचु सेटा कोन डिफरेंट प्लांट रे दुईटा टाइप रो हाइफा रही परबे कि. फॉर एग्जांपल गोटे हमर फंगस अछि, सेही फंगस रे तमरो सिनोसाइटिक हाइफा as well as तमरो सेप्टेड हाइफा रही परबे कि. नो माय डियर स्टूडेंट्स, सेथेरे तमे देखिबो जो भी तमरो फंगस हो सेते तमरो गोटे टाइप रो ही तमरो हाइफा देखबा को मिलिबो. ईदर इट इज सिनोसाइटिक और इट इज सेप्टेड हाइफा. तो तमरो गोटे टाइप रो ही हाइफा तुमको देखबा को मिलिबो. ओके, next we will see the their bodies consist of long slender thread like structures is called hypha. Cell structure हमें कौन देखुछु फंगस रा सेल स्ट्रक्चर हमें देखुछु कि तांको बॉडी रे कौन होची ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहउची जोटा का हमें कहउछु हाइफा, and that hypha form a network which is called mycelium. That hypha form a network which is called mycelium. Some hypha are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called sinusitic. एबे जस्ट टिके आगु कहउथिली कि किछटा हाइफा अछंती से माने कोन अछंती ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ सेमानकर कोन अछि ना तांका बॉडी भितरे multinucleated. It means they have more than one nucleus. तो that type of condition in hypha is called sinusitic condition, or they are sinusitic hypha. There are also hypha which is septate, which have walls within them. They are called septate and branched hypha.
others have septate or cross walls within their hypha, that is called septate hypha, just like this. Okay, and they sometimes be branched also, they sometimes be branched also. Now we will look into their cell structure. For example, they have chitin in their cell wall. तमे प्लांट रे देखुथलो कोन सेलुलोज रहउची, तमे बैक्टीरिया रे देखुथलो कोन पेप्टिडोग्लाइकान रहउची. तो तांकर फंजाई रो जो सेल वॉल रहिबो, फंजाई रो सेल वॉल रे you will see the chitins are present. आ एमानकर स्टोरेज मटेरियल तमे देखिबो ग्लाइकोजेन रहउची. ओके, एमानकर स्टोरेज मटेरियल तमे देखिबो ग्लाइकोजेन, रिजर्व फूड मटेरियल तमे देखिबो इट माइट बी एटा ग्लाइकोजेन रही पारे, ऑयल भी रही पारे. ओके, glycogen and oil, they are the reserve food material of fungi, and in the cell wall of fungi we will see chitins are present. Just like in plants you see the cell wall is composed of cellulose, just like in bacteria you will see the cell wall is composed of peptidoglycan. Peptidoglycan means a complex carbohydrate as well as amino acids are present there. Okay, just like that in fungi, in the fungi cell wall you will see chitins are present, chitins are present. So एबे से मानकर न्यूट्रिशन टाइप को देखिबा, फंजाई रो एबे हमें न्यूट्रिशन टाइप को देखिबा. सो फंजाई हमें जनरली जानलु दे आर हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स. इन हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स वी विल आल्सो सी देयर आर 3 डिफरेंट वैरायटी ऑफ हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल, वन इज योर सैप्रोफाइटिक, सेकंड वन इज योर पैरासाइटिक, third one is your symbiotic. So fungi can also be parasitic, fungi can also be saprophytic, and fungi can also be symbiotic, but most of the fungi are saprophytic organisms. So each and every categories को टिके आमे देखि दबा कि saprophytic कौन हे जाउची, saprophytic condition कौन हे जाउची when the organism or when the fungi grow on dead organic matter. जतबेले से dead organic matter ऊपर grow करूची. For example, एटा तमरो कौन हे गला, गोटे fungi हे गला, से कौन करची गोटे डेड ऑर्गेनिक मैटर ऊपर ग्रो करची. केमती ग्रो करची ना, फर्स्ट कौन कला से तार एंजाइम रिलीज कला, एंजाइम टा रिलीज करके से जो तमरो डेड ऑर्गेनिक मैटर टा रहला ता भीतर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहला ताकू से भागी के सिंपलर कार्बोहाइड्रेट रे कन्वर्ट करके ता भीतर जो सिंपलर सब्सटेंस बाहरला ताकू से एक्युमुलेट कला. तो सेटा हला तमरो कोन ना सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन टाइप. बट समटाइम्स द फंजाई ग्रो ऑन completely living organisms, sometimes the fungi grow on living organisms completely harming to them. तमर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर देखथलो सेमान तो ऑलरेडी डेड हो जाइछन्ती से सेमान ऊपर ग्रो कला. बट देयर आर आल्सो सम फंजाई हु ग्रो ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक कंडीशन. पैरासाइटिक कंडीशन रे कोन होची, सेमान जो होस्ट जहाँ ऊपर से माने ग्रो करंती सेटा को कहा जाय होस्ट. तो जहाँ ऊपर से ग्रो कले, जो होस्ट ऊपर ग्रो कले सेमान को कंप्लीटली हार्म कले, तो सेटा होची तमर पैरासाइटिक कंडीशन. देयर आर आल्सो फंजाई हु आर कंप्लीटली पैरासाइटिक. ओके, तो नेक्स्ट some plants and animals they are also parasites. For example, रिंग वर्म को देखि दियो, एटी जो फंजाई टा ग्रो करिछि एटा तमर कोन हला, एटा तमर कोन गोटे सैप्रोफाइटिक कंडीशन हला कि नाही, गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऊपर ग्रो करछि कि नाही, तो सॉरी डेड ऑर्गेनिज्म ऊपर ग्रो करछि कि नाही, गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऊपर ग्रो कला. एटा गोटे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होछि कि इट इज ए म्यूचुअल रिलेशनशिप, इज इट ए म्यूचुअल रिलेशनशिप. तो एटा गोटे म्यूचुअल कंडीशन तो होनी. तो एटा तमर को कंडीशन को आसी परिबो, एटा तमर आसी परिबो तमर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आसी परिबो. एथलेट्स फूड, एट देखिबो जो फंजाई टा ग्रो करछि, इज इट ए सैप्रोफाइटिक कंडीशन, इज इट ए symbiotic condition. So this type of condition or this type of nutrition type of fungi, it is called parasitic condition. Okay, here in rotten plants we can call the nutrition type is saprophytic. Here in rotten plants some fungi are growing. Okay, so they are growing by accumulating the complex carbohydrate, just by breaking down the complex carbohydrate to simpler carbohydrate and accumulating the simpler substances, simpler organic substances. Okay, so here the condition is saprophytic condition, but in these two conditions you can see that is they are parasitic. There are also some fungi who are symbiotic. There are also some fungi who are symbiotic. First we will consider what is symbiotic. First हमें जानबा कि symbiotic condition कौन. तो symbiotic association is an association where both the organisms are
mutually benefited. So symbiotic association is an association where both the organisms are mutually what benefited. देखिबा कोन एटा फॉर एग्जांपल पिला माने देखो एठी तमर कोन अछि फंजाई अछि. This is your fungi. This is your fungal hypha. Fungal hypha. Fungal hypha. Fungal hypha. This is your fungal hypha. Okay. And there are also some algae are present. Algae are present. माने fungal hypha भी अच्छी मझरे मझरे कौन अछंती ना algae present अछंती. तो this type of association is called lichen. This type एडी तमरो फंगस को lichen कहउनी. एई जो तमे lichen सुनछ इट इज वन टाइप ऑफ एसोसिएशन भाबी दे. गोटे फंगस आ गोटे तमरो algae ए दुई जनकर गोटे म्यूचुअल रिलेशन दैट इज कॉल्ड. गोटे एग्जांपल तमे देखिलो lichen. एग्जांपल देखो तमरो lichen तामाने एथरे तमे कोन देखिबा को पाउछ. तामाने एथे तमे कोन देखिबा पाउछ algae देखिबा को पाउछ. algae भी प्रेजेंट अछि as well as फंगस भी प्रेजेंट अछि. तो से माने केमिति परस्पर को बेनिफिट करछंती. हाउ दे आर बेनिफिटिंग ईच अदर. लुक स्टूडेंट्स algae as you know that algae they are photosynthetic organisms so they can synthesize their own food by capturing the sunlight energy solar energy. तो algae कोन करि परिबो एठी photosynthesis करि परिबो. photosynthesis करि परिबो. algae can photosynthesize here. Okay. fungus they can absorb water and minerals. तो फंगस कौन करिवो एठी ना वाटर आ मिनरल को एब्जॉर्ब करिवो. तमर जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन थाए पिला माने तो से जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन सेटा होची कंप्लीटली म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड बोथ द ऑर्गेनिजम्स दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द हेल्प ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम. तो से माने कोन करि परिबेनी ना परस्पर रो हेल्प रे विदाउट रो हेल्प रे से माने कोन करिबे ना सर्वाइव करि परिबेनी. फॉर एग्जांपल यू सी algae. Where do you see algae? They are aquatic organisms so they are found in water habitat. तो से माने वाटर रे देखा जिवे. तो फर्स्ट टाइम देखो से माने कोन करछंती ना लैंड को आछंती. तो फर्स्ट टाइम किछटा algae भाबिले कि चलो आमे कोन करबा ना फंजाई से तो फ्रेंडशिप करबा. आ फ्रेंडशिप करके कोन करबा आमे लैंड को आसीबा लैंड रे ग्रो करबा को ट्राई करबा. तो जदि से माने कोन करबे ना लैंड रे ग्रो करबेनी तांको अगेन कोन करबे ना वाटर को जिबा को पड़िबो. ताहले से माने एठी तो सर्वाइव कर परिबेनी. जदि तांको फंजी हेल्प न कला तो तांको फ्रेंड तांको हेल्प न कला तो तांको कोठी जिबा को पड़िबो. तांकर नेचुरल हैबिटेट algae नेचुरल हैबिटेट दे आर कंप्लीटली एक्वाटिक. दे ग्रो ऑन स्वाम्पी एरियाज दे ग्रो ऑन मॉइस्ट एरियाज. तो तांको वाटर दरकार पई जेंति algae कोन करंती. algae रो रूट कोन पई एब्सेंट थाए रूट सिस्टम कोन पई एब्सेंट थाए. algae आर थैलोफाइट्स से माने को रूट सिस्टम कोन पई एब्सेंट थाए काहे कि ना से माने वाटर रे ग्रो करंती. तो वाटर रे जतोल से माने ग्रो करले तांकर ईच सेल कांटेक्ट कोठी थाती ना ईच सेल कांटेक्ट हेकी थांती तांकर ना तमर वाटर सहित कांटेक्ट हेकी रहिले. तो तांको दरकार ही पड़ेनी रूट्स. तो सेति पई से माने ग्रो करि जानती वाटर रे. तो फर्स्ट टाइम जतोल से माने लैंड को आछंती तो तांको तांकर फ्रेंड रो हेल्प दरकार पड़ला. कोन पई ना तांको फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स सो दे कैन हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. तो फंगस को कौन दरकार फूड दरकार. फंगस रो कौन एब्सेंट अछि तार क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट अछि. क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट अछि माने से सनलाइट को कौन कर पारनी ट्रैप कर पारनी निज फूड तयारी कर पारनी. दे आर नॉट रोटोट्रॉप्स सो दे डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर देयर सर्वाइवल. तो एटे algae कौन करछि ताको फूड दोछि तार कोन प्रतिबदल रे फंगस कौन दोछि ताको वाटर दोछि आ मिनरल्स दोछि. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ lichen. This is an example of symbiotic relationship. Another symbiotic relationship you will see mycorrhiza. गोटे देखिले पिला माने one symbiotic relationship you saw that is lichen and another symbiotic relationship you will see mycorrhiza. So एटा कोन mycorrhiza कोन होची मैम. ओके देखिबा mycorrhiza कोन देखा पिला माने